Okay, beta. Let's move towards the another type of modulus of elasticity, my dear. That's bulk modulus of elasticity, that we will represent it by the symbol B. Okay, beta. Let us suppose मेरे पास एक यहाँ पे body है beta. This is the body for V people. Having some volume, I will say the V initial or the V original for V people is V. Now what I am doing, my dear, मैं इस पे force apply कर रहा हूँ बेटा from all the directions. This is the force which I am applying, my dear, from all the possible directions. और हर जगह बेटा जो force मैं apply कर रहा हूँ बेटा, that force is normal or perpendicular to the surface. The force is acting normally. अब इस force की वजह से क्या होता है बेटा, बॉडी का जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाता है, या मैं बोलूँगा बेटा टू बी मोर प्रिसाइज, बॉडी का जो वॉल्यूम है बेटा वो डिक्रीज होता है. मैं बोलूँगा सपोज बेटा जो वॉल्यूम मेरा डिक्रीज हुआ, और आई शुड से गुबरनोन डिक्रीज और चेंज इन वॉल्यूम, डिक्रीज इन वॉल्यूम फॉर वी पीपल इज डेल्टा वी. सो अगर मैं फाइनल वॉल्यूम की बात करूंगा बेटा, योर फाइनल वॉल्यूम विल बी गुबरनोन योर ओरिजिनल वन, दैट इज वी माइनस चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज डेल्टा वी. Now as far as bulk modulus is concerned, पहली बात तो ये है बेटा, it is one of the modulus of elasticity. और हम देख चुके हैं बेटा, whenever you want to define or you want to express the modulus of elasticity, it is the ratio of the citrus to the strain. Now in the given situation, my dear, the citrus involved is bulk citrus, या जिसको हमने नाम दिया था बेटा volume citrus, and the strain involved is volume strain. So I will say simply, Gubernoon, it is defined as, it is the ratio of bulk citrus. It is the ratio of bulk citrus, या जिसको हमने बेटा नाम दिया है volume citrus. और आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है बेटा. When I'm using the term bulk citrus or volume citrus for V people, number one, it's a citrus, that's force per unit area. Number one. Number two is the case of normal citrus, where your restoring force is generated normal to the surface, Gubernoon. So it's a ratio of bulk citrus or what we call as volume citrus to the volume strain, to the volume strain. Or I can write, my dear, the bulk modulus represented by the symbol B is given by bulk citrus divided by volume strain, or you can have volume citrus divided by volume strain. Now as far as the bulk citrus is concerned, my dear, for V people, the bulk citrus, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा, the bulk citrus for V people, when it is a citrus, पहली बात तो ये है, it's the case of normal citrus, और when it is citrus, it is simply expressed as force per unit area, जिसके लिए मैं pressure भी लिख सकता हूँ, that's Gubernoon P. और इसी तरह बेटा अगर आप bulk strain की बात करोगे बेटा, whenever we talk about the strain, it is given by change in configuration divided by original configuration. In the given situation, it is the volume parameter जो change होता है बेटा, तो bulk strain होगा change in volume, that is V final minus V initial divided by V initial or V original, my dear. Now as far as the change in volume is concerned, your V final is V minus delta V. It is the case of decrease in volume. Your final volume is V original minus change in volume, it is delta V, that's V minus delta V minus V initial is V divided by V initial is V. I lost my minus V and plus V, so you will end with the answer, that is for bulk strain, the expression is, the result is minus delta V over V. Now let us substitute the value of bulk citrus and bulk strain in the above expression. So bulk modulus हमारे लिए बनेगा बेटा, your bulk citrus, that's actually force per unit area, that is equivalent to the pressure divided by, that's minus delta V over V. या अगर आप equation को rearrange करोगे बेटा, minus यहाँ पे आएगा बेटा,
then we are left with P, then we are left with V, then we are left with delta V. This is the expression for the bulk modulus. अब क्वेश्चन में आपसे कोई भी पैरामीटर इसमें से पूछा जाता है, सपोज कभी कभार आपसे पूछा जाता है फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम, आपको प्रेशर दिया गया होगा वहां से बेटा, आपको ओरिजिनल वॉल्यूम दिया गया होगा और आपको बल्क मॉडुलस दिया गया होगा. सो और आई कैन राइट द एक्सप्रेशन फॉर बल्क मॉडुलस इज गिवन बाय द नेगेटिव साइन जस्ट इंडिकेट्स हियर with increase in pressure the volume decreases. You already know that, my dear. The negative sign signifies here that with increase in pressure the volume decreases. The volume decreases, or I should say simply Gubernon, the pressure and the volume, they change in the opposite sense. Means if you are increasing the pressure the volume will decrease, and if you are decreasing the pressure the volume will increase. So I will highlight the expression. अगर मैं negative sign को drop भी करूँगा बेटा, it's given by PV upon delta V. This is the expression for your bulk modulus. Okay, now as far as the units of the bulk modulus are concerned, मैं बोलूँगा बेटा, hey, it is again the ratio of citrus to the strain. Your strain is the unitless as well as dimensionless, so the bulk modulus will be having the units same as that of the citrus, and it will be having the dimension same as that of the citrus. So मैं बोलूँगा बेटा, अगर हम units प्लस डायमेंशंस की बात करेंगे बेटा, एज फार एज द बल्क मॉडुलस इज कंसर्न, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो बेटा, हे इट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड वी ऑलरेडी नो व्हाट आर द यूनिट्स एंड व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. दे आर सेम एज दैट ऑफ द, आई शुड से, citrus, because you express your modulus of elasticity as citrus divided by strain. So the units plus dimensions, I will say Gubernon, it is same as that of citrus. Now one more point जो आप यहाँ पे लिखोगे बेटा, the another point as far as the bulk modulus is concerned, अगर आपके पास बेटा एक perfect rigid body है, no doubt कोई बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं है, यू कैन डिफॉर्म ईच एंड एवरी बॉडी बाय सम रीजनेबल और एप्रिशिएबल फोर्स. अगर आपके पास कोई परफेक्ट रिजिड बॉडी है बेटा, मीन जिसको हम डिफॉर्म नहीं कर सकते हो, जिसका कोई भी पैरामीटर, कोई भी डायमेंशन आप चेंज नहीं कर सकते हो बेटा, फिर अगर उसके लिए बेटा अगर हम बल्क मॉडुलस को देखेंगे बेटा, उसके लिए जो बल्क मॉडुलस होता है बेटा, वो होता है इन्फिनिटी. कैसे बेटा, अगर आप ये एक्सप्रेशन यूज करोगे बेटा, व्हेन द बॉडी इज परफेक्टली रिजिड देन द चेंज इन वॉल्यूम इज गोइंग टू बी जीरो. अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो है बेटा, यू आर having the zero term in denominator, that's actually not defined, or we can call it as Gubernon infinity. So the bulk modulus for the perfect rigid body. इसी तरह बेटा अगर आप एक बेटा ideal liquid की बात करोगे बेटा, Gubernon, when I am using the term ideal liquid, ideal लिक्विड का एक मीनिंग या एक तरीका इसको समझने का है बेटा, या एक प्रॉपर्टी आइडियल लिक्विड की ये है बेटा, द लिक्विड इज इनकॉम्प्रेसिबल. आप इस लिक्विड को बेटा कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हो. अगेन योर चेंज इन वॉल्यूम इज गोइंग टू बी जीरो, एज द लिक्विड आई एम टॉकिंग अबाउट इज आइडियल, एंड द प्रॉपर्टी और वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आइडियल लिक्विड is that it is incompressible, means change in volume is zero. Your bulk modulus is again going to be infinity. So I can summarize these 2 points. If you talk about perfect rigid body, if you talk about ideal liquid, the bulk modulus for you is infinity. Okay. उसके बाद एक छोटी सी टर्म हमारे पास आती है बेटा, that is what we called as compressibility. That is what we call as compressibility. देखो बेटा, जब हम compressibility की बात करते हैं बेटा, मे बी कभी कभार आपको ये क्वेश्चंस में काम आएगा बेटा, बाकी उतना बड़ा मसला नहीं है बेटा. When we go for the compressibility, it is simply the reciprocal of the bulk modulus. I will say Gubernon, it is the reciprocal of bulk modulus of elasticity. It is the reciprocal of the bulk modulus of the elasticity. It is represented by the symbol K, and it can be written as 1 upon B. And as far as the expression for B is concerned, we are having the expression for B as minus PV over delta V, जिसको हमने अभी देखा बेटा. अब अगर हमें compressibility के लिए expression चाहिए, that the reciprocal of that will be minus delta V divided by PV. This is the expression for your compressibility. And as far as the units are concerned,
concerned my dear, अगर हम इसके units की बात करेंगे बेटा, the units of the bulk modulus, अगर हम units bulk modulus के देखते हैं बेटा, they are same as that of the citrus, that's Newton per meter square. तो उसके reciprocal से बेटा इसके units जो बनते हैं बेटा वो बनते हैं per Newton meter square. These are the units of the, I should say, bulk modulus. इसी तरह आपको ये भी पता है बेटा Newton per meter square, that is actually the unit of the pressure as well, which is expressed as Pascal. So beta, the unit of the bulk modulus same as that of the citrus, same as that of the pressure, that's Newton per meter square, which is equivalent to the Pascal. और इस वक्त compressibility की बात चल रही है बेटा, which is reciprocal of the bulk modulus of elasticity. तो units में हमने देखा बेटा per Newton meter square, या हम बोल सकते हैं बेटा Pascal inverse. Pascal inverse. These are the units of the compressibility. This is all about the small term, what we call as compressibility. Okay. Let's go through the last type of the modulus of elasticity, what we called as shear modulus. Shear modulus, or we are having another name for it, what we call as modulus of rigidity. Modulus of rigidity. सुनिए बेटा आराम से. The statement which I am repeating again and again. First, it is one of the type of modulus of elasticity, my dear. So again, it is going to be the ratio of citrus to the strain. But in the given situation, the citrus involved is shear stress and the strain involved is shear strain. That's it. Suppose बेटा हम इस diagram को repeat करते हैं बेटा. Suppose I am having some body here. ये मेरे पास एक solid body है बेटा. This is the fixed surface or fixed face of the body. Now I am applying the force in the, I should say, tangential fashion. मैं यहाँ से बेटा force apply करता हूँ. उसकी वजह से body जो है वो deform होती है बेटा. And the deformation or the displacement is produced in the angular fashion. This is the new situation or the new configuration of the body. हमने इस x को नाम दिया है, इस length को नाम दिया है deforming length, और ये है बेटा आपकी true height या actual height, and this angular displacement here, that's given on theta here. अब देखो बेटा, इस बार जब हम बेटा citrus की बात करते हैं, we know that citrus involved, or I should say the citrus जो बेटा हम modulus of rigidity या shear modulus में use करेंगे, that's shear stress, that is given by the ratio of this x to h, that is deforming length to the true height, और जिसको बाद में हम express करते हैं in terms of tan theta, और फिर अगर हमारी deformation small है बेटा, that is replaced by the theta. And as far as the strain is concerned, sorry, I am saying citrus. When we talk about shear modulus, first, it is the modulus of elasticity. When it is a modulus of elasticity, it is the ratio of citrus to the strain. पहली बात जब आप citrus की बात करोगे, that will be expressed as force per unit area. And as far as the strain is concerned, in this case, that is defined as the ratio of deforming length, that is x to the actual height, that's h, which will be expressed, which can be written as the tan theta. Then, if the deformation is small, that's theta. If theta is small, then the tan theta will be replaced by the theta. So I will write it is defined as, I am talking about the shear modulus, it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of shear citrus, या जिसको आपने tangential citrus का भी नाम दिया बेटा, it is defined as the ratio of shear citrus. It is defined as the ratio of shear citrus to the shear strain. To the shear strain. So I will write one of the symbol for the shear modulus, that's capital G. It is given by shear citrus divided by shear strain. Now further I can express my G as, I know my dear, as far as the shear citrus is concerned, अगर हम shear citrus की बात करेंगे बेटा, it's again the citrus. However, in this case, the restoring force is generated tangentially, or the deforming force is applied tangentially. So the shear stress is again the citrus, which is expressed as force per unit area. And as far as the shear strain is concerned, your shear strain is simply the ratio of deforming length, that is x, to the actual height, that is h, which is equal to tan theta. We can see my dear, ये आपका थीटा, थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर, ये आपकी बेस. फिर हम बोलेंगे बेटा for
स्मॉल थीटा, वी नो माय डियर, हमने इस रिजल्ट को यूज किया है बेटा, फॉर स्मॉल थीटा tan theta is equal to theta. So I can write my dear shear strain. अगर हम shear strain की बात करेंगे बेटा, no doubt that was x by h, that was equal to tan theta, that is equal to theta. तो G के लिए your shear stress is force per unit area divided by your shear strain is simply theta, or you can rearrange the equation. G is equal to F divided by A into theta. This is the expression for, I should say, your shear modulus of elasticity, or what we call as modulus of rigidity. And again my dear, if you are interested in the units, जब हम units की बात करेंगे बेटा, it is again the ratio of shear citrus to the strain. So अगर आप units की बात करोगे बेटा, G के unit same as that of the citrus, as the strain is unitless as well as dimensionless quantity. So मैं units की अगर बात करूँगा बेटा, I will write same as that of citrus, same as that of citrus, that is Newton per meter square, or you can express it as in terms of Pascal. And as far as the dimensional formula is concerned, dimensional formula is going to be same as that of the citrus. This is about shear modulus. So जब shear modulus की हम बात करते हैं बेटा, it is the ratio of shear citrus to the shear strain. Okay, this is all about the modulus of elasticity. At the end we'll be having the exercise जिसमें हम questions करेंगे बेटा on different moduli. There is one more term for we people, Gouvernement. The term is what we called as Poisson's ratio. Poisson's ratio. सुनिए बेटा, इससे पहले इस ratio को मैं देखूंगा बेटा. Let's have an illustration. Let's have an example here. Suppose बेटा, you are having a cylindrical rod. एक rod को मैंने यहाँ पे hang किया है. This is the rod for we people. ये मेरे पास एक rod है बेटा. This is the cylindrical rod for we people. As far as the true length or the actual length, that's the length in absence of deforming force, that's L. और इसकी अगर diameter की मैं बात करूँगा बेटा, when we talk about diameter, मैं मानूंगा suppose इसका diameter D है. अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं यहां से डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूं, या मैं कोई लोड, कोई रीजनेबल लोड, कोई ब्लॉक इसको हैंग करूंगा बेटा. उसकी वजह से क्या होता है बेटा, इसकी लेंथ जो है वो बढ़ेगी बेटा. लेकिन इस वक्त बेटा, आई वोंट बी ओनली इंटरेस्टेड इन द इंक्रीज इन लेंथ, दैट इज आई वोंट बी ओनली इंटरेस्टेड इन द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, आई विल बी इंटरेस्टेड इन द चेंज इन वन मोर पैरामीटर. मुझे पता है बेटा, जब इस रॉड की लेंथ बढ़ेगी उसकी वजह से इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डिक्रीज होगा, या क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम इंटरप्रेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ द रेडियस या इन टर्म्स ऑफ डायमीटर. सो रॉड की लेंथ जब कम हो जाएगी बेटा, हमें रॉड की लेंथ जब बढ़ेगी बेटा, इसका डायमीटर भी कम होगा. सो द न्यू कॉन्फ़िगरेशन, सो द न्यू situation of the rod will be like this. There will be change in two parameters, there will be change in two dimensions. rod की बेटा length increase हो जाएगी, लेकिन rod का जो diameter है बेटा वो decrease हो जाएगा. Suppose बेटा rod की जो length increase हुई वो increase हुई by an amount of delta L, और rod का जो बेटा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा the change, or I should say Gouvernement, change in, or I should say increase, change in length, that is delta L. And if I say Gouvernement change in diameter, उसको मैं मानूंगा डेल्टा डी. सो जो नई रॉड आपकी होगी बेटा, इसका जो डायमीटर होगा that will be d minus delta d. Now I am going to define one more strain here. एक तो यहाँ पे longitudinal strain involve हो रहा है, that is the ratio of change in length to the original length, my dear. Now there is one more strain, my dear, जिसको हम नाम देते हैं lateral strain का, और जब आप lateral strain को define करते हो बेटा, in this case the lateral strain is defined as change in diameter divided by original diameter. Now as far as the change in diameter is concerned, that will be d final minus d initial. Your d final, I will say d final minus d initial, or you can say d new minus d original, Gouvernement. Change in diameter divided by d initial. Your change in diameter is, Gouvernement, I
will say d minus delta d, that is your d final, minus original diameter, that was d, divided by original diameter, that is d. I lost my minus d and plus d, so we are left with, अगर हम बेटा lateral strain के लिए लिखेंगे बेटा expression, your lateral strain is given by minus d और plus d cancel हो जाएगा बेटा, you are left with delta d with the negative sign here divided by d. The negative sign indicates here it is the case of decrease in diameter, my dear. This is the term for we people what you call as lateral strain. Now if you want to go for the Poisson's ratio, my dear, your Poisson's ratio is simply expressed as the ratio of lateral strain to the longitudinal strain. So I will say government Poisson's ratio. Poisson's ratio is the ratio of lateral strain to longitudinal strain, is the ratio of lateral strain to longitudinal strain, or I can put it as Poisson's ratio. Poisson's ratio is equal to, when we say the ratio of lateral strain, it is lateral strain divided by it is longitudinal strain, which can be expressed as far as the lateral strain is concerned, it's minus delta d over d divided by, you are already familiar about the longitudinal strain, that is change in length, that is delta L divided by original length, that is L. इक्वेशन को थोड़ा rearrange करो बेटा, it is minus delta d over d, इसको ऊपर ले जाके बेटा ये आपके लिए बनेगा L divided by delta L. This is the expression for your Poisson's ratio. Now as far as the units of the Poisson's ratio is concerned, you can see, my dear, again it's the ratio of two strains. It's the ratio of two strains, my dear. Your strain is already unitless as well as dimensionless, and your whether you talk about the lateral strain or longitudinal strain, both are strains, my dear, both are unitless, both are dimensionless, both are just numbers. So Poisson's ratio is also going to be a number. So I will say Gouvernement, it is, I'm talking about Poisson's ratio, it is just a number. It is just a number, that is, it is unitless plus dimensionless. It is unitless plus dimensionless. Okay, almost this part, I should say the properties of solids, is at the verge of completion. We are left with few small things, then we'll be having the exercise, Gouvernement. Now let's move onwards. The next thing for we people is what we call as stress strain curve. Is going to be the variation of stress with the strain. ये हमारे पास बेटा एक वायर के लिए stress strain curve है. This is the strain axis for you people, this is the stress axis for you people. फिर मैं कुछ points highlight कर रहा हूँ बेटा. This is P, this is E, this is A, this is B, this is C. सुनिए बेटा आराम से, मैंने यहाँ पे इसको लिखा भी है बेटा, आप इसको बाद में देख सकते हैं बेटा. Up to point P, from O to P you can see the graph is straight. That is, stress is directly proportional to strain. So हम बोलेंगे बेटा up to point P, stress is directly proportional to strain, and you know that is nothing but the Hooke's law. मैं बोलूँगा बेटा up to point P, stress is directly proportional to strain. That's Hooke's law is followed or obeyed, my dear. फिर उसके बाद बेटा जब हम P से E तक जाते हैं बेटा, P से E तक stress जो है that is not proportional to the strain. However my dear, अगर आप बेटा P से E तक कहीं पे भी stress को, deforming force को remove करोगे बेटा, body जो है वो अपनी configuration को, अगर wire की बात करेंगे वो perfectly अपनी length को बेटा retain करती है. So from P to E stress is not proportional to strain. However, if deforming force is removed, the wire regains its original length. ओके इसी तरह बेटा फिर हम E से A तक जब बात करेंगे, और एक बात बेटा, up to the E, जो ये region आपको मिलता है बेटा up to the E, this region is called elastic region. Up to the point E, my dear, the body behaves like the perfectly elastic body. You already know what my perfectly elastic body is. हमने देखा बेटा, hey, if you are removing the deforming force, अगर body 100% अपनी configuration को retain करती है, the body is said to be perfectly elastic. So from up to this E, this region is what we called as elastic region. उसके बाद बेटा E से A तक आप चेक कर सकते हो बेटा, E से A तक the change in stress is not that much. You can see, my dear,
the change in citrus is not that much, means आप उतना ज़्यादा deforming force अब नहीं लगा रहे हो, but you can see the corresponding change in strain is huge. So हम बोलेंगे बेटा from E to A जो आपका strain produce हो रहा है, जो body की configuration change हो रही है वो rapidly change हो रही है बेटा from E to A. और इसी तरह हम यहाँ पे देख भी सकते हैं from E to A with slight increase in citrus strain produces is greater, or we can say strain increases rapidly and on removal of deforming force origin length is not regained. So इसके बाद बेटा E के बाद plastic character live होता है. हम देख चुके हैं when we deal with the plastic bodies, when we deal with the plastic character बेटा हम उसमें देखते हैं on removing deforming force body अपनी shape को retain नहीं करती है बेटा. इसी तरह A से B तक इसी तरह और rapidly बेटा जो हमारा strain है वो बढ़ रहा है on changing or increasing the stress slightly Gouvernement, and finally Gouvernement after reaching point B the strain increase हो रहा है even if the wire is unloaded, and finally it ruptures at C. This is going to be the stress strain curve for you people. It can be asked as a short answer question, लेकिन curve का ख्याल रखिएगा बेटा. Okay, let's move onwards. This is going to be the last part of our elasticity. After that, we will be having an exercise which may contain 8 to 10 questions. It's some facts about elasticity. Number one, जो already हम देख चुके हैं बेटा, for a material, modulus of elasticity is constant and it is the measure of elastic behavior. हमने देखा बेटा, if you want to check, if you are having more than one materials और आपको देखना है कि elastic behavior या elastic character किस में ज़्यादा है, आप चेक करना बेटा कि किस material का modulus of elasticity ज़्यादा है, उसी का बेटा जो elastic nature या elastic character या elastic behavior जो है वो ज़्यादा है बेटा. So for a material, modulus of elasticity is constant and it is the measure of the elastic behavior. और बेटा जब हम modulus of elasticity या elastic character बेटा कंपेयर करते हैं between solids, liquids and gases, and the result for we people is that the modulus of elasticity for solids is greater than the modulus of elasticity for the liquids, which is greater than the modulus of elasticity for the gases, or I can say solids are more elastic than liquids than gases. And as far as the last and the third fact is concerned, that's actually the effect of temperature. Temperature की वजह से बेटा elastic behavior में या elastic nature में क्या होता है बेटा. Listen my dear, I will say with increase in temperature, जब हम temperature बढ़ाते हैं बेटा, जो intermolecular separation है, intermolecular separation या intermolecular distance Gouvernement वो बढ़ जाती है. उस intermolecular distance बढ़ने से बेटा जो restoring force है, which is responsible for the I should say property of elasticity, वो restoring force जो है बेटा वो decrease हो जाता है. और इस restoring force के decrease होने से बेटा जो elastic character है या elasticity है वो decrease हो जाती है, या हम उसको बेटा express करते हैं in terms of the modulus of elasticity. तो modulus of elasticity जो है वो decrease उसका value जो है वो decrease हो जाता है, या elastic character जो है वो कम हो जाता है बेटा. We can see you started with the increase in temperature. Again I can say my dear, with increase in temperature intermolecular separation increases, because of that restoring force decreases, because of that इलास्टिक कैरेक्टर, योर इलास्टिक कैरेक्टर जो एक बॉडी की टेंडेंसी होती है अपनी कॉन्फ़िगरेशन को वापस लाने की, दैट इज बिकॉज ऑफ द रेस्टोरिंग फोर्स माय डियर. जब रेस्टोरिंग फोर्स ही कम हुआ बेटा वो टेंडेंसी कम होती है बेटा, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी कम होती है बेटा, या उसको हम बाद में बेटा एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो ई डिक्रीज होगा, और आई शुड से जो इलास्टिक कैरेक्टर है, जो इलास्टिक नेचर है या इलास्टिक कैरेक्टर है बेटा वो डिक्रीज हो जाता है. यू कैन सी द रिलेशन इज माय डियर इनवर्स. आई कैन से माय डियर the modulus of elasticity E is inversely proportional to temperature. This is all about this, I should say, this part of the properties of bulk matter. That was the property of solids, जिसमें हमने बेटा elasticity को discuss किया. Now let's have an exercise my dear. I will be having some questions. ये बेटा मैंने आपके लिए एक्सरसाइज डिज़ाइन की है बेटा. दिस एक्सरसाइज कंटेन 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 questions, my dear. In 8 questions I will suggest to you people, my dear, मैंने हर क्वेश्चन का आंसर लिख के रखा है बेटा. आपके लिए बेस्ट होगा अगर आप इसको बेटा खुद ट्राई करोगे. फिर अगर आइडिया नहीं मिला फिर आप बेटा वीडियो को प्रोसीड करोगे बेटा, जिसमें मैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं लेकिन क्वेश्चंस के हिंट्स ज़रूर दूंगा बेटा. बट इट विल बी बेस्ट फॉर यू पीपल. उससे आपके कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे बेटा अगर आप इन क्वेश्चंस को खुद ट्राई करोगे. और ये बिल्कुल टफ नहीं है बेटा, ये सिंपल लेवल है क्वेश्चंस की बेटा. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. देखिए बेटा आराम से. आई विल गो फॉर द हिंट्स. इट इज द हिंट्स और मे बी किसी क्वेश्चन में मैं बेटा सोल्यूशन भी दिखाऊंगा बेटा. हिंट्स और सॉल्यूशंस माय डियर. एंड लेट अस गो विद द क्वेश्चन नंबर 1. ये आपके क्वेश्चन है बेटा. क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू पीपल. गोबरनो. A wire 5 meter long and cross section 10 raised power minus 4 square meter is fixed at one end and a mass of 1200 kilograms attached at the other end. Find the elongation. आपके पास एक रॉड है बेटा और साथ साथ बेटा आपको यंग्स मॉडुलस भी उस वायर का उस मटेरियल का दिया गया है बेटा. Gubernur, in the given situation, if it is the case of wire, कोई चीज़ नॉक हो रही है, कोई आवाज़ मैं सुन रहा हूँ, वो आवाज़ है सिंपली बेटा इट इज़ द केस ऑफ यंग्स मॉडुलस, इट इज़ द केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सिट्रस, इट इज़ द केस ऑफ नॉर्मल सिट्रस, इट इज़ द केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. सो व्हाट आई विल डू, आई मस्ट रिकॉल यू बेटा. क्वेश्चन नंबर 1 के लिए अगर मैं हिंट की बात करूँगा बेटा, हमारे पास है यंग्स मॉडुलस के लिए एक्सप्रेशन. यंग्स मॉडुलस इज गिवन बाय, आई विल से गोबरमोन, इट इज़ द केस ऑफ नॉर्मल सिट्रस और लॉन्गिट्यूडनल सिट्रस माय डियर. इट इज़ द केस ऑफ longitudinal citrus divided by longitudinal strain. अब देखो बेटा longitudinal citrus, or I can say y is equal to longitudinal citrus, that's force per unit area, whole divided by it is longitudinal strain, that is change in length divided by original length. Or I can say y is equal to, equation को rearrange करो बेटा, f by a into l upon delta l. अब देखो बेटा given situation में our requirement is, the questioner says, you can see my dear, find the elongation. Find the elongation, that is हमें इसकी जो लेंथ बढ़ जाएगी इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से या सिट्रस की वजह से, वो हमें निकालनी है बेटा. देखो बेटा ये आपकी होगी मास्टर इक्वेशन. नाउ इट इज सबस्टिट्यूशन प्रॉब्लम फॉर यू पीपल. y यंग्स मॉडुलस वो दिया गया है 0.98 into 10 raised power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. फोर्स आपके पास कुछ वायर ऐसी थी बेटा और यहां से आपने बेटा ब्लॉक को हैंग किया, ये इसका फिक्स्ड एंड है. ब्लॉक का मास आपको दिया गया है 1200 किलोग्राम. नाउ एज फार एज द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कंसर्न, दैट इज सिंपली mg. यू ऑलरेडी नो दैट माय डियर, योर मास इज गिवन. लेकिन ख्याल रखिएगा बेटा आंसर अगर आपका मैच होना चाहिए बेटा तो g का वैल्यू आप 9.8 लोगे बेटा. एंड दैट इज सिमेट्रिकल बिकॉज यू कैन सी वन ऑफ द वैल्यू फॉर यू पीपल इज 0.98. सो ऑलमोस्ट ये सिमेट्रिकल होगा बेटा. क्वेश्चनर उतना ख्याल जरूर रखता है बेटा. सो f, so I was saying Gubernur, in this equation your y is given, your f is given, that's mg, your actual length is given, that's 5 meter, your area is given, that's 10 raised power minus 4 square meter. Now your requirement is delta l. Just to rearrange the equation, in fact if I will rearrange, delta l will be equal to Gubernur f into l divided by a into y. Now substitute the values, you will end with the answer. This was about the question number 1. Okay, now the question number 2 for you people. अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे बेटा, यू आर हैविंग a steel wire of length 4.6 meter and cross section 3 into 10 raised power minus 5 square meter stretched by same amount as a copper wire of length 4 meter and cross section 4 into 10 raised power minus 5 square meter under the same load. When I'm saying under the same load, it means the deforming force is same. The ratio, हमें ratio निकालना है बेटा Young's modulus of steel to the Young's modulus of copper, and the answer is 23 is to 15 या 23 by 15. देखिए बेटा आराम से, पहली बात तो ये है बेटा, जब आप यहाँ पे स्टील वायर को लोगे बेटा, आप दोनों के लिए यंग्स मॉडुलस वाली एक्सप्रेशन लिखो बेटा. और आई कैन सी द यंग्स मॉडुलस इन जनरल इज गिवन बाय, उसके लिए हम एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं बेटा और बहुत बार यूज कर चुके हैं बेटा. दैट इज f into l डिवाइडेड बाय a into delta l. This is the expression for your Young's modulus. This is the expression for your Young's modulus, my dear. Now in the given situation, my dear, ये आपके लिए जनरल एक्सप्रेशन है Young's modulus के लिए, और फिर आप बेटा लिखोगे Young's modulus for steel, उसके लिए एक्सप्रेशन बेटा you will write Young's modulus for the copper. ये आपके लिए दो एक्सप्रेशन निकलेगी बेटा. Now as far as the Young's modulus of steel and the Young's modulus of copper is given, आपको रेशियो चाहिए बेटा. देखो बेटा अब फोर्स की बात करेंगे बेटा, अगर यंग्स मॉडुलस की बात, अगर स्टील की बात करेंगे बेटा, सपोज आपका डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो F है बेटा, एंड द क्वेश्चनर सेज
अंडर द सेम लोड, सो वही F यहाँ पे होगा तो रेशो में कैंसिल हो जाएगा बेटा। इसी तरह गुबरमोन लेंथ दोनों की दी गई है 4.6 मीटर फॉर आई शुड से स्टील एंड इट इज गुबरमोन 4 मीटर फॉर द कॉपर। सो लेंथ्स भी दोनों की दी गई है बेटा, एरिया भी दोनों के लिए दिए गए हैं बेटा, एंड डेल्टा एल क्वेश्चन वहीं से बोल रहा है बेटा stretched by the same amount, so delta L is same, F is same. So जब आप Y steel to Y copper ratio लोगे बेटा, your force parameter and the delta L parameter वो cancel हो जाएंगे बेटा, दोनों की lengths और दोनों के area दिए गए हैं बेटा, दोनों की lengths and दोनों के area दिए गए हैं बेटा, you can easily go for the ratio and you will end with the answer 23:15. This is the question number 2 for you people. Now as far as the question number 3 for you people is concerned, it says that Young's modulus of a material of length L, radius R, it is actually the characteristic of the area is Y Newton per meter square. If the length is reduced to L by 2 and R is reduced to R by 2, the Young's modulus will be 2Y, Y by 4, Y by 2 and Y. अगर इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए सोचूंगा, आपके लिए दूंगा बेटा, आई एम सेइंग देयर इज नो नीड ऑफ यूजिंग पेन एंड पेपर। क्वेश्चन आपको बोल रहा है फॉर सम पर्टिकुलर लेंथ L and radius R, Young's modulus is Y. Now you are changing the L and the R. Leave that aside. What is the nature of change? Increase हो रहा है, decrease हो रहा है, कितनी टाइम्स चेंज हो रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, लेकिन आपको बोलना है अब Young's modulus क्या होगा। My dear, I must recall you, Young's modulus हमने अब भी पढ़ा बेटा, some facts about elasticity में, that Young's modulus is the constant quantity and it depends on nature of material and the temperature. In the given situation you are bringing change in length and radius, means na material change हो रहा है na temperature change हो रहा है, so the Young's modulus will be same. So the answer is the option number 4. Okay beta, now let's move towards the question number 4. So यहाँ पे question number 3 में आपको बोलूँगा बेटा, y is the function of the nature of the material and y is the function of the temperature, and in the given question na nature na temperature beta change ho raha hai. Now let's move towards the question number 4. Question number 4, one of the beautiful and the important one for we people. शायद asked question है, लेकिन मैं आपको रिमाइंड भी करूंगा बेटा कि हमने जो यहाँ पे बेटा ये एक्सरसाइज की है, इट इज ओनली फॉर योर बोर्ड एग्जाम माय डियर, ड्यू टू टाइम प्रॉब्लम एंड द अदर फैक्टर्स गो बी ऑन. ओके, Young's modulus of a wire is numerically equal to citrus. Young's modulus of a wire is numerically equal to citrus, which will not change the length of the wire, double the length of the wire, increase the length by 50% and none. बेटा हमें ऐसी सिचुएशन को चेक करना है जिस वक्त Young's modulus numerically होगा बराबर किसके, citrus के, और वो citrus हमें देखना है बेटा वो लेंथ को कैसे चेंज करेगा बेटा. I will write Young's modulus के लिए एक्सप्रेशन हमारी बेटा that is again citrus by citrine. आराम से देखना बेटा. I know it's the case of longitudinal stress or normal stress, that's force per unit area, and strain is the case of longitudinal strain because we are dealing with the Young's modulus, my dear. अब क्वेश्चन बोल रहा है Young's modulus is numerically equal to citrus, so y citrus के बराबर है बेटा. y कब citrus के बराबर होगा, जब आपका strain simply बेटा 1 होगा. so I will say गुबरमोन y कब citrus के बराबर होगा, जब ये टर्म डिनोमिनेटर वाली टर्म 1 होगी. so it implies गुबरमोन y will be only equal to citrus when your strain will be equal to 1, but your strain in the given situation is longitudinal strain, and that is given by change in length divided by original length, my dear. delta L by L is equal to 1. जरा change in length की बात करेंगे बेटा, your delta L is equal to L. so आपकी length change हुई है बेटा by an amount of L. your original length was L. अगर बेटा delta L L है बेटा, delta L L के बराबर तभी होगा बेटा when your L final, delta L बेटा L के बराबर तभी होगा when your L new or L final will be 2L. hey my dear, you can check delta L होती है बराबर L final minus L initial. अगर L final twice L है, L initial L है, only then your delta L will be L. so this citrus is going to double the length of the wire. so हमने देखा बेटा Young's modulus is numerically equal to citrus. That's only true when the strain is 1. strain 1 का मतलब means delta L L के बराबर है. so change in length is the original length. it means इस citrus की वजह से जो length change हुई है बेटा वो change हुई है twice. so the answer is गुबरमोन double the length of wire. okay, let's move towards the question number 5. Let's move towards the question number 5. The question number 5, one of the beautiful one again.
Calculate the elastic potential energy stored in a brass rod of length 20 centimeter and area 1 square centimeter when it is elongated by a force of 50 Newton. Given that Young's modulus of elasticity for brass is 10 raised power 11 Newton per meter square, और आंसर आपका ये होगा बेटा. बेटा हमें चाहिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. हमने कल एक रिजल्ट बेटा, इट इज क्वेश्चन नंबर 5 फॉर वी पीपल. हमने कल रिजल्ट देखा बेटा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो हमें कल मिली. उसके लिए एक्सप्रेशन बेटा 1/2 सिट्रस इंटू सिट्रेन. ये कल हम बेटा एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. नाउ इन द गिवन सिचुएशन our requirement is elastic potential energy, not elastic potential energy per unit volume, my dear. Now what I will do, I will write elastic potential energy is equal to, इस volume को वहां दफा करो बेटा, it is 1/2 into citrus into citrane, और साथ में हो जाएगा multiple में volume. Now in the given situation, you know 1/2 already. Citrus is given by force per unit area. आपको force दिया गया है 50 न्यूटन, आपको एरिया भी दिया गया है 1 square centimeter, but you need to be cautious about the unit conversion, my dear. You have to deal with the SI system. Your force is expressed in Newton, your Young's modulus is expressed in Newton per meter square, and by the way, the final answer is expressed in joules. That's your SI system. So गुबरमियोन अगर हम इसमें बेटा unknown parameters की बात करेंगे बेटा, our requirement is elastic potential energy. एक बार फिर बेटा हमने रिजल्ट कल देखा, elastic potential energy per unit volume is given by half of citrus into strain. In the given situation, our requirement is not elastic potential energy per unit volume, but our requirement is elastic potential energy. तो वॉल्यूम को वहां पे लिया बेटा 1/2, that is just a numerical constant. Citrus is simply given by force per unit area, so you know force per unit area. Or as far as volume is concerned, my dear, volume is nothing but the product of area and the length, and that is given. Length भी दी गई है, area भी दिया गया है, लेकिन यूनिट कन्वर्जन का ख्याल रखिएगा. अब जो हमारे लिए प्रॉब्लम है या हेडेक है बेटा, that is strain. But I will say again, hey, there is no problem at all. I will tell you the Young's modulus is given by Gubermian citrus divided by citrine. जरा अगर इक्वेशन को rearrange करके बेटा हम strain को निकालेंगे बेटा, हमें strain यहाँ से मिलेगा बेटा citrus by y, हमें strain मिलेगा बेटा citrus by y. Now citrus वाली टर्म ऑलरेडी प्रेजेंट है. आप यहाँ से बाय द वे बेटा अगर आप इक्वेशन को यहाँ पे मॉडिफाई भी करोगे, EPE इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय 1/2. ऑलरेडी टर्म थी citrus, अब strain की जगह आएगा citrus by y, तो citrus into citrus that is given by Gubermian citrus square, डिनोमिनेटर में आया y, और यहाँ से बेटा है वॉल्यूम. योर citrus is easily your citrus you can calculate the citrus by force per unit area, साथ में स्क्वायर भी लीजिएगा बेटा. योर y is given, that's the Young's modulus for the brass, that's 10 raised power 11 Gubermian, and your volume, that's the product of area and length. You will end with the answer inshallah 2.5 into 10 raised power 5 joules. Okay, this was about question number 5. Let's move onwards, my dear. Question number 6 for we people. देखिए बेटा आराम से. A solid sphere of radius 10 centimeter is subjected to a uniform pressure equal to 5 into 10 raised power 8 Newton per meter square. Calculate the change in volume if the bulk modulus of the material of sphere is this much. सुनो बेटा, हमें change in volume, that is delta V निकालना है. I must recall you bulk modulus is given by, that's again the ratio of your I should say the normal citrus or the volume citrus or the bulk citrus. So it's going to be the ratio of your normal citrus again, or I will say bulk citrus divided by, it's going to be the volume strain. अब एक्सप्रेशन को याद करो बेटा, bulk citrus that's given by again force per unit area divided by volume strain, that is given by change in volume divided by original volume. I will ignore the negative sign, my dear, that is the case of decrease, my dear, or which implies F by A, इसको rearrange करके it is V upon delta V Gubermian, या bulk modulus B is equal to force per unit area, उसकी जगह मैं pressure लिख सकता हूँ बेटा, साथ में original volume V divided by बेटा delta V. ये आपकी बन गई बेटा final expression Gubermian. Now let's check. Our requirement is delta V. You can rearrange the equation. Delta V will be equal to Gubermian PV upon B. Your pressure is given. That's 5 into 10 raised power 8 Newton per meter square. You can calculate the volume. Your radius is given. You can go for the formula for the volume of the sphere. It is a spherical figure Gubermian. Volume आप calculate कर सकते हो, and the bulk modulus is given, and you will end with the answer. This is about question number 6, my dear. Let's move to finally बेटा to question number 7. देखिए बेटा,
Again, question number 7, it is again one of the, I should say, the important, and I think it is asked question, my dear. Question number 7. A rubber ball is taken to a depth of 200 meter in a lake. Its volume decreases by 0.1%. मीन्स अगर इसका ओरिजिनल वॉल्यूम v था तो डिक्रीज हुआ है by an amount of 0.1%, that is 0.1% of V. If the density of water is 1000 or 10 raised power 3 kilogram per cubic meter and G is 10 meter per second square, find the bulk modulus of the material of the ball. Hey my dear, I am going to use the result bulk modulus B, यहीं पे आपको लिखा है बेटा, is given by P into V divided by delta V. देखो बेटा, आप प्रेशर की बात करोगे बेटा, आपने फ्लूइड्स में पढ़ा है बेटा, what we call as hydrostatic pressure और gauge pressure और pressure due to liquid column. उस pressure के लिए expression है बेटा H into rho into G, where H is the depth that is given as 200 meter, rho is the density of that fluid or liquid, that is this time water, that's 1000 Kuberman, and G is 10. So you know the pressure. अगर आप original volume V लोगे बेटा, आपका बेटा delta V जो है वो है 0.1% of the V, or you can say delta V is equal to 0.1 divided by 100 of V. यहाँ से बेटा जब आप डेल्टा V का वैल्यू पुट करोगे आपको V पैरामीटर्स कैंसिल हो जाएंगे बेटा, जब आपको V पैरामीटर्स कैंसिल हो जाएंगे बेटा, you will end with the result that's given as 2 into 10 raised power 9 Newton per meter square. So P आपका यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और गेज प्रेशर और प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम. So this is question number 7. Now the last question for you people. That is question number 8. The upper face of a cube of edge 1 meter moves through a distance of 1 millimeter relative to the lower fixed surface under the action of tangential force 1.5 into 10 raised power 8 Newton. Calculate the tangential stress, shear strain and the modulus of rigidity. और आंसर्स आपको दिए गए बेटा. सुनिए बेटा, ये आपके पास एक सपोज क्यूब है. दिस इज द क्यूब फॉर यू पीपल. मैंने इसको बेटा बाकी फेसेस नहीं दिखाया, लेकिन आप खुद समझ सकते हो बेटा. नाउ व्हाट आई एम डूइंग माय डियर, क्यूब की आपको लेंथ दी गई है, इट विल बी 1 मीटर हेयर, इट विल बी 1 मीटर हेयर, और ये आपका बेटा है फिक्स्ड एंड. नाउ यू आर अप्लाइंग द फोर्स टेंजेंशियली. दिस इज द फोर्स फॉर यू पीपल, जो फोर्स आप अप्लाई करते हो, एंड दैट इज गिवन एज द फोर्स यू आर अप्लाइंग इज गवर्नमेंट 1.5 into 10 to the power 8 न्यूटन्स. और उसकी वजह से बेटा द अपर फेस ऑफ ए क्यूब ऑफ एज 1 मीटर मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर. सो हमें पता है बेटा बिकॉज ऑफ दिस टेंजेंशियल फोर्स द डिफॉर्मेशन विल बी लाइक दिस. The deformation will be like this, and it says this deformation or distance for you is 1 millimeter. Yes, it's 1 millimeter Guberman. और हमें क्या निकालना है बेटा, calculate the tangential stress. Now as far as the tangential stress is concerned, it is again the case of stress my dear. So for first part you will write my stress or tangential stress is force per unit area. force आपको दिया गया है, ये क्यूब है बेटा, हर फेस का जो एरिया है वो हर फेस जो बेटा क्यूब का है वो स्क्वायर शेप है, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, साइड दिया गया है 1 मीटर. सो आप एरिया वहाँ से और आपको फोर्स दिया गया है. नंबर 2, दूसरा आपको क्या निकालना है बेटा, दूसरा आपको निकालना है बेटा shear strain. shear strain आपको निकालना है बेटा. I must recall your shear strain is equal to Guberman the ratio of deforming length, that is 1 millimeter, divided by the actual height, that is 1 meter. 1 millimeter can be expressed as 10 raised power minus 3 meter divided by 1 meter. उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा. So your shear strain is equal to 10 raised power minus 3, and it is just a number. ये तो strain और stress के यूनिट आपको मिलेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. एंड फाइनली आपको निकालना है modulus of rigidity represented by the symbol G, that is given by, I should say, shear stress divided by shear strain. Okay my dear, this is the end of your exercise and this is the end of your part, and I want to tell you a few more things my dear. Because of the time problem and the other factors बेटा हम इसमें numerical part को उतना नहीं ले सकते, and I will suggest to you people कि इस वक्त आप सबसे ज़्यादा जो ध्यान दोगे बेटा वो बोर्ड एग्ज़ाम के साथ दोगे बेटा. देन जो भी आपको बेटा कमी रहेगी बेटा इसमें अगर रही बेटा तो उसको आप बाद में देखिएगा बेटा, लेकिन फ़िलहाल फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द बोर्ड एग्ज़ाम, एंड दीज नोट्स एंड दीज लेक्चर
lectures are enough, not enough, they are more than sufficient I should say for your board exam. Rest अगर कहीं पे जल्दी में मतलब बोलने में कुछ गलती हुई होगी, I will say I'm saying sorry for that, and wish you all the best for your exams and for your this 11th class exam and for your rest career. The important thing is we know it is presently it is uprising. It is not easy to have consistency in the present situation, but I will suggest to you people, we have no option other than that. There is no compromise as far as our studies are concerned. So strongly अपनी books को time दीजिएगा बेटा. अगर आप आधा घंटा ही concentrate कर पा रहे हो तो आधा घंटा ही पढ़ो, उसके बाद उठो, थोड़ा आप refresh हो जाओ, फिर books पे आओ बेटा. Okay, thanks.